Yes.
क्या डिसीजन है? कौन है ऑनलाइन? राधा पाटिल। But to start with alveoli. नो इसका कर दिया था, ट्रकिया कर दिया था, ये सब कर दिया था। ठीक है। इस रेडियो नहीं होगा।
Share screen. Basic screen और एक कारखाना इसको ये वीडियो दिखने के लिए चाहिए तो बस पे ये दिखाना है तो आर यू एबल टू सी द बोर्ड Yes, sir. and the PPT? Yes, sir. I'm able to see. Okay. Okay. So now already we started with this part. I'm not showing on the PPT part. We'll be going on the board, but just for understanding again, revising. Nose, nasal chamber. Then we said it's the pharynx, trachea, bronchi, bronchioles, ultimately ending up into alveoli. We said majority of them function is only one: passage of air. Nose में सिर्फ different है, nostrils and mucus, traps there, filters there, worms there. Okay, trachea, opening of trachea is known as glottis, covered by a flap known as epiglottis. So why is epiglottis present? पढ़ाई किया है to prevent the food from entering into the windpipe. Okay, the trachea is having support. What is that? Cartilage rings or rings of cartilage. What is the shape of the rings of cartilage? So C shape. Why C shape? The space left for expansion. Okay, so this is what we studied in terms of the respiratory part. So यहाँ पे the bronchi further divided into small branches known as bronchioles. So primary bronchioles, secondary bronchioles, tertiary bronchioles, ultimately ending up into a thin bag-like structure known as alveoli. Now, here we are going to study is in terms of exchange of gases. आपके बुक में लिखा है heading as exchange of gases at tissue level and exchange of gases at the alveoli level. Okay, I think exchange of gases in tissues और उसके पहले के पेज पे exchange of gases at alveoli. lungs के अंदर ही नीचे exchange of gases in lungs लिखा है, two lungs लिखा है, small subheading लिखा हुआ है. Okay, just above the big heading that is mechanism of inhalation के ऊपर. Okay, now then we have to study under this process two headings: one exchange of gases at the lungs and another exchange of gases at the tissue. दोनों आंसर सेम है, ओनली थोड़ा चेंज करना है, इधर का उधर करोगे दोनों का आंसर सेम हो जाता है. So there is nothing like बहुत बड़ा कुछ स्टडी करना. So do not focus on to the board part, focus on to the blackboard part now. The bronchi ultimately end up into a bag-like structure known as alveoli. Okay, this alveoli is richly supplied by blood capillaries. Okay, so there is a blood capillary coming to this alveoli. Now, what is this blood capillary known as? What is the branch of this blood capillary? The branch of this blood capillary is known as pulmonary artery, which is carrying deoxygenated blood from the heart to the lungs for purification of blood, or what we say as for oxygenation. So it's the branch of pulmonary artery which has entered into the lungs, and into the lungs it is divided into small capillaries. So on this alveoli we are able to say is the capillaries. Wherever there is diffusion exchange taking place, it is always capillaries. Small intestine में capillaries है, यहाँ पे भी capillaries है. What type of blood it is having? Deoxygenated. So it has more amount of carbon dioxide. So यहाँ पे there is more amount of carbon dioxide. What is alveoli having? Oxygenated blood. So there is more of O2 into the alveoli. Simple, there is a diffusion occurring. And what is the definition of diffusion?
The movement of molecules from higher concentration to lower concentration. So the O2 from the alveoli diffuses into the blood capillaries, and CO2 from the blood capillaries diffuses into the alveoli. And this is how exchange of gases takes place at the alveoli level. Am I clear? Then, कुछ नहीं सिर्फ there is more O2 in the alveoli, there is more CO2 in the blood capillaries. Diffusion बढ़ाना चाहिए आंसर में. So diffusion of gases takes place. CO2 from capillaries enter into O2, and O2 from the alveoli enters into the blood capillaries. Am I clear? समझ में आया? अब next we need to study is exchange of gases at the tissue level. Okay, ये हुआ at the alveoli level. So यहाँ पे अपन ने ऑक्सीजन ले लिया. Now we go to tissue. Tissue means any body part, anything of your body जहाँ पे ऑक्सीजन यूज होगी. So we draw the same diagram again. So shortcut बता रहा हूँ. The blood vessels लंग से बाहर निकले, कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट पे जा रहे हैं. हार्ट से होके वो बॉडी पार्ट पे जाएंगे. तो अपन सिर्फ दिखा रहे हैं. तो सेम टाइप ऑफ ब्लड. व्हाट इज द ब्लड which is coming over here? Oxygenated blood. So this is an oxygenated blood which is going from the heart or from the body, from the heart, from lungs to the heart, and from the heart to the various parts of the body. So what are the various parts? Any tissue of your body. So let us take an example, a liver cell or a kidney cell, any cell of your body. Now, what is happening in this cell is there is continuous process of respiration. हमने कहा था, what happens in respiration? Glucose is broken down to give me reaction. Glucose is completely broken down to give me, बोलो, and TP और एनर्जी अलग अलग है. दिखाई दे रहा है वैसे कितना पढ़ाई कर रहे हो. अभी अरे मैंने लास्ट टाइम मॉन भी किया था, तो 3 घंटे का एक्स्ट्रा लेक्चर में उठा ही दूंगा तुम आज. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP. This is a reaction which goes into every cell of our body, that is tissue of our body. So there is more CO2 over here. What is over here more? O2. So again diffusion takes place. O2 from the blood capillaries enter into the cell, and CO2 from the cell enters into the blood capillaries. So again diffusion takes place, and this is what I mean by exchange of gases at the tissue level. समझ में आया? सेम है, सिर्फ उल्टा करना है. अगर O2 alveoli से जा रहा है तो at the lung level, सेल के अंदर जा रहा है तो at the tissue level. Now these two processes which you are going to study, इसमें एक there is a helping molecule, and that helping molecule is hemoglobin. Now hemoglobin has affinity for 3. What are 3 affinities? Carbon dioxide, oxygen, and carbon monoxide. Okay. Now the 3 imagine it as chicken tandoori, vada pav, yani vada pav, pizza, okay, and there is something. So which is the first option? नॉनवेज खाया तो सबसे पहला चिकन तंदूरी ना. तो बॉडी के लिए पहला ऑप्शन क्या होगा? कार्बन, श्योर, कार्बन मोनोऑक्साइड. सेकंड भूल गया, okay, rightly said. First option is carbon monoxide, that is by deadly poisons. Okay, hemoglobin has an affinity to combine with carbon monoxide to form anybody
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. Then second affinity is towards oxygen to form oxyhemoglobin. Third option किससे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड to form amino hemoglobin. चल, there is always a mistake. आप कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लिखते हैं. Hemoglobin combines with carbon dioxide to form carboxy hemoglobin. It is not carbon dioxide, it is carbon monoxide. So, what is the purpose to give this part is the moment hemoglobin से साथ ही combine होकर सब कुछ आ रहा है. So, hemoglobin present in the blood, it is a pigment present in the RBCs which has the function to carry the oxygen and various other gases. अब hemoglobin कौन है? Hemoglobin अपने Indian politician. You can say perfect word. They are Indian politicians. Okay? Hemoglobin जब यहाँ पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, okay? अब उसको लगता है यार पार्टी चेंज करना पड़ेगा. इस टाइम ऑक्सीजन जीतने वाला है. So shift बीजेपी से कांग्रेस देगा. So hemoglobin कार्बन डाइऑक्साइड को टाटा बाय बाय करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है. फिर यहाँ पे आता है, फिर वापस पार्टी चेंज. बोलते यार अभी कांग्रेस का फायदा नहीं, अभी किसी और के साथ फायदा है, अभी बीजेपी का वापस जाना फायदा है. तो वापस O2 को बाय बाय और CO2 को लेगा. बट इस पूरे प्रोसेस में दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द मोमेंट आई पुट यू इनटू अ चेंबर वेयर देयर इज मोर अमाउंट ऑफ CO, तो मेरा बॉडी सबसे पहले एब्जॉर्ब क्या करेगा? CO. And that is why when there is a fire etc you feel breathlessness होगा, because आपकी बॉडी भले ऑक्सीजन CO2 वो सब कुछ होगा पर पहला कंबाइन करेगा हमेशा CO के साथ, दूसरा ऑक्सीजन के साथ, अब तीसरा और एक चीज पढ़ना है उसके बाद. Then there is a river flowing in this direction. Okay, वो अपन क्या बोलते हैं इसको? रिवर राफ्टिंग. Okay, अब यहां से यहां जाना है. The small boat you have, इसके ऊपर मशीन लगी है, there is a mechanized boat, the motor है. Will you on it? क्यों? सर एनर्जी बचाओ, पैसा बचाओ, पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ, जो भी बचाओ. सर रिवर के फ्लो के साथ जाना ना, जो को ऑन करने की जरूरत नहीं. But if I want to go like this, so I need to apply pressure. The motor चालू होना ताकि opposite से जाए. Against the exactly same thing over here. कार्बन डाइऑक्साइड सबसे लास्ट है बिकॉज वो भले कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन के साथ बट वेरी रेयर. नाउ व्हाई वेरी रेयर? समथिंग टू डू विद कंपोजिशन ऑफ ब्लड. व्हाट इज ब्लड मैक्सिममली मेड अप ऑफ? ब्लड मेजरली मेड अप. प्लाज्मा किससे बना? What is your body majorly made up of? So, blood में सारा क्या है? पानी. Okay? Is CO2 soluble in water? हाँ या ना? Very good. Cold drink पीते हो? Aerated drinks बोलते हैं उसको. Okay? Carbonated drinks बोलते हैं. What is that carbonated drinks? CO2 is dissolved into the water, तब जाके वो सोडा बनता है. When hemoglobin आसानी से कंबाइन होके कार्बोनेट्स के फॉर्म में ब्लड में घूम सकता है, तो कंबाइन होके हीमोग्लोबिन के साथ क्यों जाएगा? वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दिस इज, सोचो तैरना स्कूल बाजू में ही है. मान लो तुम तैरना स्कूल में पढ़ रहे हो, तो पढ़ रहा है बाजू में पढ़ रहे हो और तुम इस बिल्डिंग में रह रहे हो, इसी बिल्डिंग में रह रहे हो, स्कूल बाजू में, एंड
जब तुम आसानी से जा सकते हो, imagine your mom and dad catching your finger and taking you to the school at this time. अजीब लगेगा? आया ना? इसलिए जब आसानी से वो कार्बोनेट फॉर्म में डिजोल्व होकर निकल सकता है, तो हीमोग्लोबिन के साथ नीली पकड़ के क्यों जाना? And that is why a rare combination. Clear with this? Okay. So अगर एग्जाम में पूछा गया exchange of gases at tissue and nucleus, simple है. The oxygen CO2 which is attached to carbon hemoglobin, अपन लिखते हैं hemoglobin लिखेंगे यहाँ पे, comes to the alveoli part. Alveoli is rich in O2. The nearby blood capillaries are rich in carbon dioxide. So diffusion takes place. CO2 from the blood capillaries moves into the alveoli, and O2 from the alveoli moves into the blood capillaries. उल्टा यहाँ पे लिखोगे. The hemoglobin combines with oxygen, brings near to the tissues. In the cell, there is respiration going on, so CO2 is formed. So CO2 is more in the cell, and oxygen is more near the blood capillaries. Again, diffusion takes place, and that is how the exchange of gases takes. Am I clear? Everybody, online, Radha, Patil, इधर है किधर है? Yes, sir. Yes, sir. क्या सर? Out of है? नहीं घर पे ही है? नहीं, मैं बाहर हूँ, बेलगाम आई हूँ. बेलगाम में आई हूँ. Yeah, big harassment. Okay, so now we move ahead to the next part. Is mechanism. See, hemoglobin can combine with carbon dioxide. Okay, but very rare combination. वो combine करता नहीं, बहुत कम. अगर 10 मॉलिक्यूल है तो एक हाथ 2 मॉलिक्यूल. Reason? जो 8 molecules है, the moment it comes into the plasma, diffuse होके plasma में आएगा. So when it is easily soluble in water, what is plasma? Water वो soluble हो जाता है पानी में, form carbon. तो वो आसानी से soluble form में निकल जाएगा. तो combine करने की जरूरत है उसको. Why would you spend energy to form a bond? कौन सा मतलब? हाँ. Very rare, few molecules will be attached to hemoglobin. Majorly it will be in the form of carbonic acid, carbonates वगैरह. Okay, and oxygen will combine with him. Oxygen पूरा का पूरा combine करेगा, पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम combine करेगा. Okay, पर कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ सबसे ज्यादा combine. So if I take 10 molecules of CO2, 10 molecules of CO, and 10 molecules of तीनों 10-10 molecule और बॉडी के अंदर है. So out of 10 CO, there might be almost 7 to 8 combining with him. एक हाथ 2 शायद ऑक्सीजन के साथ कर ले और एक हाथ शायद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, पर ऑक्सीजन से कमी होगी. ओके, और ना के बराबर, बिकॉज़ वो इजीली सॉल्युबल है. ठीक है. Next children, the next heading which we need to understand is the mechanism of breathing. लिखा है. अगेन सर, mechanism of breathing एग्जाम में इतना पूछते नहीं है, अगर डायग्रामेटिक फॉर्म में ही आता है. एंड अगेन कुछ पढ़ने ऐसा है नहीं. जैसे यहाँ पे उल्टा करना है, वहां पे भी उल्टा ही समझना है थोड़ा बहुत. 2 things we need to understand. अगर एक साइड समझ में आ गया तो सेकंड साइड समझ में आता है. सो इट लाइक अगर ये समझ में आ गया उसका उल्टा करो तो एक्सचेंज ऑफ टिश्यूज हो गया. सेम वे इनहेलेशन समझ में आ गया तो एक्सहेलेशन आ जाएगा, एक्सहेलेशन आया तो इनहेलेशन आएगा. कंडीशंस अप्लाइड, दिमाग चल रहा होगा तो. So first of all, what is breathing? The inhalation or the intake of O2, oxygen rich air, and giving out carbon dioxide rich air is known as the breathing process. So breathing involves 2 processes: breathe in, breathe out. Technically known as inhalation and exhalation. Also known as inspiration, also known as expiration. सब कुछ एक ही है, सिर्फ टर्म अलग अलग है. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन. समझ में आया? अब टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, शैल आई रब दिस बोर्ड?
पूरा रब करूं? Okay. Now what is inhalation and exhalation? अगर मान लो ये lungs है side views में से, and this is the diaphragm which is on which the lungs are resting. So ये diaphragm हुआ, ये lungs हुए. The lungs are externally covered by rib cage. Protective में ये rib cage है. So there are ribs present around the lungs. Now सिर्फ ribs नहीं होते ना, ribs के ऊपर there is obviously muscles present onto it. So between the ribs there are muscles. These muscles are known as intercostal. It is not costal, it is costal. C-O-S. There is intercostal muscles present between the ribs. Diaphragm is a muscular structure. The intercostal muscles are also muscular structure. Now we need to understand what happens in the inhalation process. So what is happening in the inhalation process? Inhalation में air would enter inside. So what type of air will enter? CO2 or O2 rich? O2 rich. So why O2 enters into the process of inhalation? So we need to understand this part. सबसे पहले the diaphragm contracts. So the diaphragm contracts. What is happening? It is pulled downwards. This straight हो जाएगा, ऐसे आके straight हो जाएगा. Okay, so that's the order form दिखा रहा हूँ. This is the pulled structure. So it is pulled downwards. Contraction हुआ, it is pulled downwards. The muscles have a property of contraction and relaxation. So diaphragm is a muscular structure. It is contracting, it is pulled downwards. Same time, the intercostal muscles also contracts. ये भी contract हो रहा है. So when they are contracting, it pulls rib cage outwards. So अब ध्यान देना, outward मतलब अगर मैं ऐसे हूँ, इनहेलेशन कर रहा हूँ, ये थोड़ा बाहर आ रहा है, थोड़ा ऐसा होने को, तो just a millimeter or so. Okay, that increase will take place. So this is what we said. It pulls rib cage outwards. So this part, muscles के बीच में contract हो रहा है और rib cage को थोड़ा ऊपर और बाहर की तरफ. क्यों? हाँ, मसल्स पूरी बॉडी पे यहाँ पे पूरा है. ओवरऑल इफेक्ट दिखेगा, ऐसे पुल हो रहा है, इसके वजह से दिख के थोड़ा ऊपर थोड़ा बाहर. यू कैन सी नो, अपना हाथ रखना ऐसे, थोड़ा ऊपर आ रहा है ना, ये थोड़ा ऊपर थोड़ा बाहर, थोड़ा ये हो रहा है. जहां से पुल जब हो रहा है ये थोड़ा ये हो रहा है, अंदर नहीं बैठेगा. Okay, so here it pulls rib cage outwards. Now what happens due to this? इस पूरे यहाँ पे ये जो पूरा लंग पार्ट है उसको चेम्बर को बोलते हैं thoracic chamber. तो ये जो पूरा पार्ट है thoracic chamber, what will happen to the volume? ये बाहर आया, ये नीचे गया, उसके अंदर का वॉल्यूम क्या होगा? So thoracic chamber volume increases. So what will be the pressure? वॉल्यूम और प्रेशर का रेशियो क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन? इनवर्स प्रोपोर्शन. सो ऑब्वियसली इट वुड डिक्रीज. वॉल्यूम इंक्रीज. सोचो ना, अगर मैं इसको दीवार को साइड भेजूं, इन दीवार पे साइड भेजूं, तो बीच में का एयर का प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? ऑब्वियसली कम होगा ना. सो द प्रेशर डिक्रीजेस. वेयर इज द प्रेशर डिक्रीज?
thoracic chamber inside. Where is high pressure? इधर लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर किधर होगा? बाहर, outside pressure. So air always rushes from which pressure to which pressure? Higher pressure to lower pressure. So thoracic chamber volume increases, pressure inside decreases. So as a result, the air from higher pressure outside the body rushes inside. A process known as inhalation or inspiration. Is it clear? Repeat करो एक बार. Okay. Then this is the lungs. Lungs are supported by rib cage. Rib cage के बीच में there are muscles which are known as intercostal muscles. Lungs are resting on a muscular structure known as diaphragm. So it's again a muscular structure. So there is a muscular structure down. There are muscles on the upper part. Both of them contract. ऐसा नहीं कि एक contract है. Both of them contract. So when the intercostal muscles contract, they are pulling the rib cage slightly upward and outwards. The diaphragm contract is pulled downwards. So thoracic chamber volume increases. So pressure inside it decreases. Pressure outside is high compared to inner side. So the air from outside rushes inside. A process known as inhalation. समझ में आया? Everybody. अगर समझ में आया तो अब exhalation आप बताओ. So what will happen in exhalation? Go stepwise. Diaphragm relaxes. Relaxes. So what will happen? इधर क्या लिखोगे? Relaxes हुआ तो इधर क्या होगा? Good. It goes back to original position. It goes back to its original part. Okay. Then intercostal muscles relaxes. It pulls the rib cage back to its original position. Okay. So what happens to thoracic chamber volume? Volume decreases. The pressure inside it increases. So now pressure is more inside compared to outside. So air from inside rushes outside. Or what is that process known as? Expiration, exhalation, or breathing out. So what type of air goes out? CO2 rich air. What types of air comes in? Oxygen rich air. कोई doubt है? Sure. सबको समझ में आया? चल एक पढ़ना है, उसका ऑपोजिट दूसरा है. अब वॉल्यूम पे ध्यान देना. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हो गया, टर्न द पेज. उसके बाद एक्सलेशन लिखा है, वो भी अपन ने कर दिया. उसके बाद ब्रीथिंग साइकिल लिखा है. नॉर्मली वी ब्रीथ हाउ मेनी टाइम्स इन अ मिनट? 15 to 20 and not 72 times a minute. तो नॉर्मली बुक खुला है इसलिए पता है. अगर बुक बंद होता कहां से यही एक्सपेक्टेड था कि 72 टाइम्स अ मिनट. 72 टाइम्स क्या होता है? आगे तो अगर इतना आपका ब्रीथिंग रेट होता ना तो अपन बात ही नहीं कर पाते. You would have never talked as such. So that is why the breathing rate is 15 to 18 minutes. Am I clear? Now 15 to 18 is the breathing cycle. So what is one breathing cycle? Inhalation and exhalation is known as a breathing cycle. अब उसके बाद एक हेडिंग दिया हो. Breathing cycle के बाद residual volume of air. The last term which you need to study this one. What is residual volume of air? The amount of air left out after forceful exhalation is known as residual volume of air. Go slowly and understand this part. What is residue? Leftover, bacha kucha. So residual volume of air मतलब बचा कुचा वॉल्यूम ऑफ एयर. अब ये बचा कुचा क्यों बोला जाता है?
If I inhale, exhale, inhale, अपन yoga class नहीं attend कर रहे से. So when we inhale, we normally inhale 500 ml of air. Normal breathing के case. Okay, ये आपको ICC में आपको नहीं है, तो आपको सिर्फ basic understanding है. तो normally breathe in 500 ml of air. Now when we exhale out, तो पूरा एयर बाहर निकलता है. Some amount of air is always left. So now let us take an example. कितना अंदर गया? एक्सेल किया तो मान लो सर थोड़ा बचेगा, तो 350 गया ऐसे मान के चलते. कितना बचा? 150. पर ये 150 के बचा जब आई डन नॉर्मल एक्सेलेशन, कुछ ये नहीं किया. बट व्हेन आई डू फोर्सफुल एक्सेलेशन, मतलब नॉर्मल एक्सेलेशन हो गया, 150 जाने वाला मतलब 350 जाने वाला था, पर अब मैं ऐसा करता हूँ. आई ट्राई माई बेस्ट कि जितना है सब कुछ बाहर निकाल. नॉट लाइक okay, so now when I try to do forceful exhalation, 350 के ऊपर ही जाना चाहिए, पूरा बाहर निकलना चाहिए. पर तभी भी मान लो मे बी 100 और गया हुआ है फोर्सफुल की वजह से, तभी भी 50 बचा. I'm just giving example ना, 50 बचा. This amount which is left after forceful exhalation is known as residual volume of air. Now we need to understand क्यों बचता है. Why residual volume of air is left? So two reasons for it. सबसे पहला reason, okay, it fastens the process of diffusion in the alveoli part. Now what do you mean by this? Is मेरे हाथ में बॉटल है, okay, मान लो अपन सब लाइन से बैठे हुए, say sitting over here, okay, एक बेंच छोड़ के you are sitting, एक बेंच छोड़ के तुम, एक बेंच छोड़ के पीछे आप बैठे हो. बॉटल मेरे हाथ में, आई नीड टू पास दिस बॉटल बाहर, पीछे पास करना लास्ट बेंच तक, एंड यू नीड टू कीप द बॉटल एट वन पॉइंट. यहाँ पे स्टैक्स ऑफ बॉटल है, मान लो ब्रिक्स है, आपने को ब्रिक्स को पास करना है पीछे की तरफ. ओके, सो आई स्टार्ट गिविंग ब्रिक्स, एक एक करके ब्रिक आपको दे रहा हूं, आप पास करते जा रहे हो, एंड देन यू कीप इट ओवर देयर. देन स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ होगा, but once you are in rhythm, हो रहा है कि it will go on faster. Okay, but अब इस प्रोसेस में मैंने एक को बाहर निकाल दिया, will the process take place faster? तो चेन टूटा और टाइम लगेगा, फिर ये वापस को मिलाया तब भी टाइम लगेगा सेट होने के लिए. Then if there is no O2 left, if there is no residual volume left in the lungs, what will happen? The process will be interrupted. So diffusion रुकेगा, फिर चल होगा, रुकेगा, फिर चल होगा, तो वो स्लो हो जाएगा. But it is always continuously going on. So what is happening? There is the fastest process. So the residual volume of air fastens the process of diffusion. And second important reason why there is residual volume of air, what is the trachea supported by? डबल आया, कितने घर जाओगे? घर कितने सर कार्टिलेज. तू तो वहां पे आराम कर रही ना, उसको पूछ के फायदा क्या है? इनका बोल रहा हूँ, कितने बजे जाओगे? 2:30 शायद ना, तो 15 है ना. ठीक है, थोड़ा टाइम के बाद मैसेज भेजवा था, the children will come at 3:15. पढ़ाई कर रहे हो? Rings of cartilage, okay, जैसे ट्रकिया को सपोर्ट कर रहा है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, दैट आर आल्सो देयर इन ब्रोंका, ब्रोंक्यूल्स में कम हो जाता है. बट व्हेन इट कम्स इनटू द एल्वियोलाई पार्ट, देयर आर नथिंग लाइक रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. तो एल्वियोलाई में जब एयर डिफ्यूज हो जाएगा तो इट विल बी लाइक, वो भी तो प्रश्न होता है, सकता होता है. सो बिकॉज इज ऑलवेज द रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, इट इज नॉट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, वरना हवा गया लंग्स ऐसे क्रैश हो जाएंगे. So always there is air to make the lungs spongy and inflated. Clear with this? See,
there is a alveoli, इसके ऊपर cartilage rings नहीं है. So when the air is passed through the alveoli, exchange हो गया, तो अगर residual volume होता ही नहीं तो क्या पूरा exchange हो गया? There is no air in the alveoli, it will be पिचक जाएगा ना. So in order to avoid that, some amount of air is always present in all the alveoli. That air is known as residual volume of air. So by that, officially we complete the respiration chapter also, the respiration part also. अब इसके बाद का पार्ट है ना, अब अपना वॉल्यूम्स बंद करोगे और बोर्ड पे फोकस करो. बाहर है कोई स्पेशल लड़की नहीं ना, ये लगा ऐसे कब से बाहर देख रहा है. ओके चल, अब जो अपन कर रहे हैं वो है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. स्टार्टिंग पार्ट विल गो स्लाइटली फास्टर बिकॉज इसमें आपको सिर्फ बेसिक चीज समझनी है, जो शायद पता होगी, शायद दिखाई दे रहा है. कार्टिलेज रिंग्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द एल्वियोलाई, hemoglobin, oxyhemoglobin, carbamohemoglobin and carboxyhemoglobin. Residual volume of air, inhalation and exhalation. So you can see over the diaphragm pull outwards, relaxes होता है तो वापस back to original position. Rib cage expands as a result, muscles contract, थोड़ा बाहर की तरफ move हो रहा है, so volume increases. So inhalation and exhalation. Now we go on to next part is transportation in humans. अब सिर्फ देखते जाना है, बस में कुछ क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. अगर ये भी आंसर नहीं आया तो सच्ची किधर तो डूब मरो. ओके, दैट इज द ओनली आंसर आई कैन गिव. सो व्हेन आई से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस. व्हेन आई से ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, टॉकिंग अबाउट ओनली वन सिस्टम, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सर्कुलेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम? Normally we say sir transportation of blood in our blood vessels. No, then वो हुआ blood circulatory system. So when I just use the word transportation, transportation क्यों होता है? To take things from one place to another, or move one place to another. जैसे अपन बस से ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रेन से ट्रांसपोर्ट, various means are there, but transportation का काम नहीं होता. Exactly same way when I say circulatory system, talking about circulation, the movement of circulatory fluid from one part of the body to other to carry enzymes, respiratory products and other things is known as circulation. अब इस circulation में मैंने कहा the transport or the movement of circulatory fluid. So what are circulatory fluid which you have heard about? तुम्हारे बॉडी में सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या है? ब्लड. और कोई सुना है? कम से कम बोर्ड पे लिखा है, पढ़ने आता होगा, अनपढ़ हो नहीं शायद. लिवर. उसके अलावा कोई सुना है? The first circulatory fluid was amoeba, water, certain bacteria, water, porifera, water, colentrata, water. ऐसा शायद 9 में बकवास पढ़ा होगा तो. Okay, so all the water was the medium to carry substances in and out of the body. फिर water से डेवलप हुआ hemolymph, colorless fluid है, but थोड़ा better version than water, present in insects. The blood of insect को blood निकालता है, उनको hemolymph कहता है. So it is colorless fluid, so that is hemolymph. फिर आया better version of all known as blood.
blood जो अपन पढ़ने वाले blood circulatory system. So when the circulating fluid flows into a closed pipes, then we say it as blood, and that is blood circulatory system. Blood से ही derive हुआ. From the blood, filter out blood is known as lymph. सबसे पहले पानी था, फिर उससे derive हुआ hemolymph, फिर उससे derive हुआ blood, और blood से filter होकर बनता है आपका lymph. So these are interconnected. So in human beings, when I say circulatory system, there are two types of circulatory system: open and closed. So what is open system and what is closed system? When the circulating fluid, I'm not using the blood, I'm not using the blood lymph. When the circulating fluid flows into closed pipes, then it is known as closed system. Pipes के अंदर जब fluid move करता है तो उनको बोलते हैं closed system. When the circulating fluid flows in open body cavity या open spaces, body cavity open ही होता है हमेशा. So when the circulating fluid flows in open cavity or body cavity or open spaces, we say it as open circulatory system. हमारे में दोनों system present है. We have closed in the form of blood circulatory system. So when I say blood circulatory system, I'm referring to when the circulating fluid blood flows into closed pipes, that is blood vessels, it is known as blood circulatory system. But when I say open, I'm talking about the lymphatic system. Madam, बाद में check कर लेना, right पढ़ा रहा, wrong पढ़ा रहा. Okay, when the circulating fluid is flowing through open body cavities, we say it as open system. Example, lymphatic system. Lymphatic detail में पढ़ेंगे, because that is the part where समझ में नहीं आता. ये समझ में आएगा, ये थोड़ा difficult हो जाता है समझने में. Shall we go ahead? Now, blood circulatory system. अपन सिर्फ यही पढ़ने वाले इस part में. So what is blood circulatory system made up of? तीन components है. What are three components of blood circulatory system? सबसे पहला क्या होगा? Definition सबसे पहला क्या है? The circulating fluid ना, circulation पर circulating fluid कौन सा है? Blood. सबसे पहले made up of blood. दूसरा, so what are the closed pipe? Blood vessels, which are further divided into good arteries, artery, vein, and capillary. अब closed system में अपन ने कहा when the circulating fluid flows through closed pipes. अब जब closed pipe में move करेगा तो उसको pressure भी maintain करना पड़ेगा. In order to maintain the pressure, there is a pumping organ. What is the pumping organ? The heart. Okay. At no point you will draw heart like this. Okay. So it's the heart which is the pumping organ. तो सिंपल है, जब रिवर से पानी मूव करता है या स्ट्रीम से पानी मूव करता है बारिश के टाइम पे, इट जस्ट गोज हियर एंड देयर. जहाँ पे जगह मिली मूव करता है वहां पे पंप लगाया जाता है क्या? नहीं, तो वो ओपन हो. और अपने जब घर पे पानी आता है तो अपने घर पे देयर इज अ पंप, मोटर चालू होता है तभी पानी आता है. तो मोटर का काम कौन कर रहा है? हार्ट. घर के पाइप्स को अपन ब्लड वेसल्स क्लोज टाइप के लेते हैं and move क्या कर रहा है? पानी का blood. So the three components which you are going to study: blood, blood vessels, and hearts. कोई doubt है? Okay. Next, सबसे simple function of blood circulation. Book में पूरा list दिया हुआ, same book उठाया है. Okay, तो आपको सिर्फ समझना है. What does it transport? Transport के ऊपर आप ऐसे लिख के आ सकते हो. आपको जो पसंद आया सब चिपका लेना. Transport of nutrient, transport of excretory products, transport of respiratory gases, transport of metabolic intermediates,
ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस दैट, जो जितना न्यूट्रिएंट्स के बदले ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, यूरिया, रेस्पिरेटरी गैसेस, तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन में आ। सो इफ आई टेक जनरली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो यहाँ के हिसाब से 1, 2, 3, 4 और एक ट्रांसपोर्ट, 5 फंक्शन है। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर बहुत सारे सब हेडिंग्स है। दूसरा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्लड मेंटेन्स योर बॉडी टेम्परेचर। अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही तो क्या होता है, क्या होता है, स्वेटिंग होती है। सो वेयर इज द स्वेट कमिंग आउट, ब्लड से ही स्वेट बनता है। सो व्हेन द ब्लड कम्स टू दैट एरिया, स्वेट हो रहा है, इट गिव्स आउट हीट अलोंग विद दैट स्वेट। थोड़े टाइम के बाद आपका टेम्परेचर कूल हो जाता है। ओके, देन कम्स द मेंटेनेंस ऑफ पीएच, बफर सिस्टम। कभी सुना है बफर? इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी में शायद होगा। ओके, वो नहीं है, मुझे एक्सपेक्टेड था, इसके लिए बोला। Okay, that is something else. So, buffer system. What is buffer system in our body or in biology? Any solution which resists change in pH, उसको buffer बोलते हैं। मतलब, if I take acidic content, उसमें मैं अल्कलाइन डालूं तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, सॉल्ट बनेगा, हाँ या ना? पचलन बफर ऐसा चीज है जिसमें मैं एसिड डालूं, जिसमें मैं सॉल्ट डालूं या कुछ भी डालूं, बेसिक डालूं या एसिड डालूं, उसका पीएच, जो बफर का पीएच है, वो वही रहने वाला। इट विल नॉट कम टू न्यूट्रल और इट विल नॉट गो टू अल्कलाइन। ओके, नाउ व्हाई सच कंडीशन? ब्लड अगर बफर नहीं होता एक मोमेंट में, तो वही ब्लड स्टमक पे यहाँ पे भी जाता है। स्टमक में एसिडिक कंटेंट है, तो मतलब क्या pH 2 या 3 पे आ गया, एसिडिक एकदम। फिर वो आगे बढ़ा इंटेस्टाइन में, तो एसिडिक कंटेंट होगा नहीं ना? वहां पे क्या न्यूट्रल होगा? नहीं। वहां पे वो अल्कलाइन होगा? नहीं। सन ब्लड का pH जगह जगह चेंज नहीं होता। ब्लड चाहे वो एसिड में जाए, चाहे वो अल्कलाइन में जाए, चाहे वो कहीं पे भी जाए, ब्लड pH ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कई बुक्स में 7 पॉइंट न्यूट्रल बोला जाता है, but not neutral, it is 6.7. Okay, slightly acidic, slightly. That is what the pH is. Next is protection from disease. किसका फंक्शन है? गुड। चलो, ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स है उनका फंक्शन तो ब्लड का भी होगा। तो व्हाइट ब्लड सेल्स है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस। नेक्स्ट फंक्शन किसका है? प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सो प्लेटलेट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है, डब्ल्यूबीसी फाइट अगेंस्ट डिसीज और इम्यूनिटी है, और आरबीसी टू कैरी रेस्पिरेटरी गैसेस। उसके अलावा प्लाज्मा का कंपोनेंट जो बाकी बचा सब कुछ। So this all are the functions of blood circulatory system. Am I clear, everybody? Any solution which resists change in pH. मतलब अगर मान लो ये बॉटल में मैंने बफर रखा हुआ है ब्लड, अगर मैं इसके अंदर एसिड डालूं, तो इसका ये मतलब कि कैसा, ये था 2 था और एसिड डालेगा तो ये और एसिडिक बन। नो, इसमें मैं एसिड 10 लीटर डालूं या इसमें बेसिक 10 लीटर डालूं, इसका पीएच जो है वही रहने वाला, इट विल नॉट चेंज। तो अगर मान लो आपने खाना खाया जो बहुत एसिडिक था, तो वही फूड एब्जॉर्ब होगा ब्लड के अंदर, तो मतलब अभी सर एसिडिक ब्लड हो गया। फिर थोड़े टाइम के बाद बेसिक खाया, सर अब मेरा ब्लड बेसिक हो गया। ब्लड नेवर चेंजेस इज पीएच, वो कांस्टेंट रहता है, उसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। Shall I go ahead? आगे बढ़ू? सबसे पहला जो अपन पढ़ रहे हैं
according to this diagram is blood. Okay, वैसे पूछना बेकार होगा तुम लोग के लिए, मुझे पता है तुम बेकार हो ही, वैसे भी बोलने की जरूरत नहीं है, पर स्टिल आदत से मेरी मजबूरी है इसके लिए. हाउ डू डिफाइन ब्लड? इसका आंसर देगा ना तो तुम पास. ऐसा मैं बता दूं, ये ऑलरेडी तुमने पढ़ा है -7 अंडर द हेडिंग टिश्यू चैप्टर. पूरा तो राइट नहीं है, पर कम से कम थोड़ा तो आंसर दे. ब्लड is a specialized fluid connective tissue. Bone, ligament, tendon, ये सब fluid नहीं है, ये अकेला fluid है. So it's a specialized fluid connective tissue made up of plasma and cells. That is what we define blood. It's a specialized fluid connective tissue made up of plasma and cells. Book में लिखा हुआ है. Okay, so that is what blood is. So अब अपन blood का composition देखते हैं. So what is blood made up of? Two components. कौन से composition है? Plasma and cells. So you can see the yellow part is plasma and उसके नीचे का part पूरा cells है. Plasma constitutes almost 55% और 45% constitutes the cells. अब पहला प्लाज्मा समझ लेंगे. प्लाज्मा 100% अगर प्लाज्मा है तो उसमें से almost 90 to 92% is water. You can see 90 again, these figures can vary थोड़ा बहुत आगे नीचे, पर normally 90-92 के रेंज में प्लाज्मा में पानी होता है. बाकी बचा 7% वो क्या है? प्रोटीन्स और बहुत ही कम अदर सॉल्यूट्स लाइक रेस्पिरेटरी गैसेस एंड वो सब एकदम छोटे अमाउंट में पर है. ऑल दैट वुड बी ऑलमोस्ट 1.5%. चल सबसे ज्यादा क्या है आफ्टर वाटर इज प्रोटीन्स. व्हाई सो मच प्रोटीन इन योर ब्लड? सबसे ज्यादा प्रोटीन ही है ना देखा जाए तो उसमें. बिकॉज ये प्रोटीन्स आप फर्दर ही बढ़ी, आपको है नहीं पता, सिर्फ नॉलेज के बता रहा हूँ. तो प्रोटीन्स के बहुत सारे सब टाइप्स है. एक तो पहला प्रोटीन तो अपना बिल्डिंग ब्लॉक है, इसके लिए भी याद है. दूसरा, इन प्रोटीन्स में देयर आर मेनी कंपोनेंट्स लाइक एक एल्बुमिन है, दूसरा फिब्रिनोजेन है, ग्लोब्युलिन है, so some of the proteins which are present in the blood. Okay, और भी बहुत सारी लिस्ट है, जैसे 2-3 ये लिखे जो इम्पोर्टेंट. एल्बुमिन सुना है? नहीं? नॉनवेज खाते हो? कितने जन खाते हो? प्रोटीन का नहीं सकती है. तो एल्बुमिन और एल्बुमिन और उससे अमीनो एसिड मिलते. अंडा खाते हो? क्या मिलता है उससे? प्रोटीन्स. तो कौन सा प्रोटीन उससे आता है? एग में. The white part is albumin. रॉ फॉर्म में एल्बुमिन, जो उसको बॉईल करके आप बेक करते हो येलो का व्हाइट बन जाता है ना, तो एल्बुमिन हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. पर कच्चा खाओगे तो एल्बुमिन. ओके, सो मेजर. तो अपने बॉडी में मेजर प्रोटीन्स में ये आते हैं. मतलब अगर वो 7% को मैं कैलकुलेट करूं तो ऑलमोस्ट 3-4% तो यही है. बिकॉज बता रहा हूं. दूसरा फिब्रिनोजेन. ब्लड क्लॉटिंग जो फंक्शन है ना प्लेटलेट का, ये प्रोटीन से क्लॉट बनता है. अगर ये प्रोटीन नहीं है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं है. तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं है तो व्हाट इज द डिजीज नोन एज?
बायो का तो बैंड है, पर जनरल नॉलेज का तो और भी बड़ा बैंड। गुड। रॉयल डिजीज वो जनरल टर्म है, हीमोफीलिया, where the person fails to blood clots। मान लो अगर तुम्हें हीमोफीलिया है, थोड़ा सा कट भी हुआ तो ब्लड ऐसा मस्त फवारे के लिए, इन दैट केस यू मे आल्सो गो अपस्टेयर्स, बिकॉज़ क्लॉटिंग नहीं हुआ ना। इसका कट किया नॉर्मल है तो 2 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद तो रुक जाएगा, तुम्हारे केस में रुकने वाला नहीं है, तो रुकने वाली नहीं है। ओके, सो दैट्स द फिब्रिनोजन। ग्लोबुलिन अनदर इंपॉर्टेंट प्रोटीन, रीजन इसका एक कैटेगरी आता है इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको लिखा जाता है आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन। पूरे 2 साल जब घर बैठ के बैंड बज रही थी ना अपनी, तो अपन एक ही चीज के ऊपर फोकस कर रहे थे, कोविड के एंटीबॉडीज कब बनेंगे, एंटीबॉडीज कब बनेंगे। ओके, दैट एंटीबॉडीज आर दिस, इस प्रोटीन से बनते हैं। तो तुम्हारे बॉडी में जितने एंटीबॉडीज है, दे आर ऑल प्रोटीन्स मेड अप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन कैटेगरीज। ये मेन प्रोटीन्स मैंने लिखे। अब ये अगर ब्लड में सबसे ज्यादा है वो, बिकॉज इनकी जरूरत तो है ही, वैसे भी एल्बुमिन की भी जरूरत है, बिकॉज ये मेंटेन करते हैं आपके विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। व्हाट इज विस्कोसिटी? गुड, फ्री फ्लोइंग नेचर ऑफ ब्लड। ब्लड तुम्हारा पानी के माफिक है क्या गाढ़ा है? इट्स लाइक फ्री फ्लोइंग वाटर, या यू कैन से सूप या दाल उतना ऑयल की तरह थिक है। ओके, उसको विस्कोसिटी बनाना। आई होप उतना समझ में आता होगा। ओके, सो दिस आर सम ऑफ द प्रोटीन्स, व्हाई दैट इज व्हाई प्रोटीन्स आर। उसके बाद चलो सबसे इजी पढ़ने वाला है, द 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। द 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। अब इसके बाद थोड़ा और पढ़ोगे, एग्जाम में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट लिखोगे, राइट? erythrocytes, which are known as RBC, leukocyte known as WBC, and thrombocytes known as platelets. So other time when we use technical terms, RBC is known as erythrocytes, WBC is known as leukocytes, and platelets known as thrombocytes. So we go one by one. से पहले erythrocytes, also known as, why are they red blood cells? क्यों बोला? Because why are they red in color? So because hemoglobin. Good. So why is hemoglobin से red क्यों होते हैं? आंसर है आपकी बुक में इसके लिए। Why is blood red in color? Because of the presence of RBCs, within which is present a pigment known as hemoglobin. उसके आगे सर मैं लड़का क्यों? बिकॉज मैं लड़का हूं। The hemoglobin is made up of 2 components, heme plus globin. अपन ने hemoglobin लिखा था, so heme is iron, globin is protein, इस कैटेगरी में आता है, so it is iron plus protein combination. What is the function of hemoglobin? Good, it carries oxygen. So when oxygen combines with iron, what is that process known as? Good. अभी इसका conclusion क्या हुआ?
तुम्हारा खून रेड इसके लिए है बिकॉज इट इज रस्टेड. ओके, टेक्निकली वो राइट है. क्या द ब्लड इज रेडिश ब्राउन इन कलर बिकॉज ऑफ द रस्टिंग ऑफ ऑक्सीजन विद आयरन. पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा नहीं है. प्रैक्टिकली तुम्हारा खून तो रस्ट नहीं है बट ब्रेन रस्टेड है. ओके, जिसको हर 3 महीने के बाद ऑयलिंग सर्विसिंग करना पड़ता है और वो बाय मिस्टेक एग्जाम के 1 दिन पहले होता है ना. हंस रहे हो मतलब कंफर्मेशन है क्या हमारा सर दिमाग रस्टेड ही है. प्रोटीन, it is made up of iron and protein. Iron combines with oxygen to give it a reddish brown color or reddish color. That is nothing but rusting. So अपना खून rusted है देखा जाए तो. Clear with this? So what is the function of RBC पूछा तो transport of respiratory gases. You will not write oxygen. Transport of respiratory gases could be CO2, CO2, O2 या CO. तीन हो सकते हैं. So अपन just लिख देगा. It is a transport of respiratory gases. Why it is red in color? Because RBC has hemoglobin, which is made up of iron and protein. Iron combines with oxygen, oxidized हो जाता है. So iron gets oxidized to give reddish brown color or reddish color. Am I clear? Everybody? Online Radha? Yes, sir. Okay, आधा घंटा बाकी है. Next is WBCs, also known as leukocytes. सबटाइप्स लिखे, जानने की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड एट योर लेवल. ओके, सो आपने सिर्फ एक ही वर्ड, व्हाइट ब्लड सेल्स आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट. एक फंक्शन क्या है, वो प्रिवेंट नहीं करता. इंग्लिश का भी बैंड है. To fight against diseases, provide immunity. It provides immunity to our body. It fights against foreign substances. It fights against disease-causing germs, or it fights against diseases. ये लिखना है. Third, thrombocytes, known as platelets. Function, good. चलो एक तो पास. Helps in clotting of blood. एक ही फंक्शन है, हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. WBCs एक ही फंक्शन है, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी. RBCs एक ही फंक्शन है, कैरीज रेस्पिरेटरी गैसेस. कोई डाउट है? डन. दिस इज व्हाट कंपोजिशन ऑफ ब्लड इज ऑल अबाउट. नेक्स्ट, ब्लड कहां से मूव करता है? ब्लड वेसल्स. सो वी गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. अब तुम डिफाइन करोगे मुझको, व्हाट आर आर्टरीज, व्हाट आर वेन्स, व्हाट आर कैपिलरीज. इस 7th में पढ़ा होगा. इसका बोल रहे डेफिनेशन, आर्टरीज का बोला आगे. From heart to the body, all body parts of the body. Good. Veins carry the oxygenated blood from the parts of the body to heart. Very good. और कुछ बचा भी? पहला डेफिनेशन आर्टिकल का थोड़ा राइट दिया था, फिर बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चक्कर के केस में पूरा ही रॉन्ग कर दिया. The moment I use the word oxygenated or deoxygenated blood, it goes wrong. Simple definition: arteries carry blood away from the heart. Veins carry blood towards the heart.
है, but when I say arteries carry oxygenated blood away from the heart, pulmonary artery exception हुआ, तो वो रॉन्ग हो जाता है. सो सबसे पुराना डेफिनेशन जो था आर्टरी और वेन का was arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. Veins carry deoxygenated blood except pulmonary veins. पचलन इसमें अगर एक्सेप्शन लिखना भूल गए तो 0 मिलने वाला है. Because arteries carry oxygen blood. Do all arteries carry oxygenated blood? No. तो अगर आपने exception लिखा है तो 0 मिलेगा. So arteries carry oxygenated blood, veins carry deoxygenated blood. Wrong हुआ. Arteries carry oxygenated blood except pulmonary arteries. Arteries carry deoxygenated, veins carry deoxygenated blood except pulmonary vein. पर artery एक चीज तो कर रहा है ना, चाहे ऑक्सीजन हो या डिऑक्सीजन ब्लड हो, it is always carrying blood away from the heart. So pulmonary artery क्या कर रही है? ब्लड हार्ट से दूरी लेके जा रही है. So that is why we say arteries carry blood away from the heart is what we say artery, and veins are the one which carry blood towards the heart. इस डायग्राम में उल्टा दिया है. From heart artery लिखा है और from to heart vein लिखा है. Vein is carrying the blood from heart. अच्छा उल्टा ही कर, राइट ही वहां से लिखा from heart. So arteries carry blood away from the heart is known as arteries. Veins are the one which carries blood towards the heart. समझ में आया? उसके अलावा कोई डिफरेंस है? दो डिफरेंस हो गए. पहला डेफिनेशन हुआ arteries carry blood away from the heart, veins carry blood towards the heart. Arteries carry oxygen blood, veins except pulmonary artery, veins carry deoxygen blood except pulmonary vein. उसके अलावा कोई डिफरेंस है? Good. Veins have valves. Arteries don't have valves. Arteries have thick muscular walls. Veins have thin muscular walls. Okay. अब नोटबुक ओपन करना. हाँ मतलब जिनका नहीं है ना अभी, आलसियों की कमी नहीं है. एक ढूंढने जाए तो 3-4 मिल ही जाएंगे. डायग्राम इज नॉट देयर फॉर यू. आपको ये कॉपी करना है डिफरेंशिएट फॉर्म. Arteries carry blood away from heart, veins carry blood towards heart. राधा मैडम आपको भी कॉपी करना है, फोटो क्लिक नहीं करना. Yes, sir. नेक्स्ट लेक्चर में जब भी मिलेगी तो बुक चेक करूंगा. ओके, स्टॉप राइटिंग. पहला मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको टाइम देता हूँ कॉपी करने. पहला तो समझ में आ गया डेफिनेशन, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट. दूसरा भी समझ में आ गया, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स. अब तीसरा पॉइंट, आर्टरीज हैव थिक वॉल, वेन्स हैव थिन वॉल. अब यहाँ पे ध्यान देना, डायग्राम आपको है नहीं, मैं पहले ही बोला आपको डायग्राम है नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए. तो दोनों का डायमीटर अगर सेम हुआ तो आर्टरीज और वेन्स दोनों बनते 3 लेयर्स. they are made up of 3 layers of cells. Outer layer is known as externa, middle layer is known as media, and innermost layer is known as interna. Technical words बहुत सारे, tunica adventitia, tunica media, tunica intima, also known as tunica externa, tunica media and tunica interna. अपने को जरूरत कुछ भी नहीं है, अपने को सिंपल समझना है. क्या आर्टरी और वेन कितने लेयर से बने हैं? 3. सैंडविच के 3 लेयर होते हैं वैसे. आउटर लेयर सबसे पतला है, इसे ये दिखाया, कनेक्टिव टिश्यू से बना है. 9th स्टैंडर्ड कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट का काम करता है. मिडल लेयर जो है वो है मस्क्यूलर लेयर. आर्टरीज में बहुत मोटा है ये, इट्स लाइक अ क्लब सैंडविच लेयर. और वेन में अपना नॉर्मल सैंडविच छोटा सा. सो व्हाई आर्टरीज में थिक वॉल्ड होता है?
Because the thicker the wall, greater is the pressure generated. Greater is the pressure generated, more force the blood will flow. Arteries में blood को force से flow करना है पूरे body के पास. इसको pump करना है heart से. तो heart तो pumping कर ही रहा है. और उसके बाद जैसे बाहर निकलेगा आगे भी तो pump करना है हर body के तक. इसके लिए thick walled है. अब vein में ये layer thin है. तो बीच में का जो कैविटी बचता है जहां से ब्लड मूव करने वाला है उसको बोलते हैं ल्यूमन. एनी सिलेंड्रिकल पाइप इनर स्पेस इज नोन एज ल्यूमन. अगर मैं ये पाइप पकड़ता हूं अपना क्लासरूम तो ये बीच में का जो गैप है उसको क्या बोलेंगे? ल्यूमन. तो आर्टरीज में थिक वॉल था तो ल्यूमन क्या होगा? छोटा, स्मॉल. वेन में क्या है? बिग. चिल्ड्रन वही लिखा है इस पार्ट में भी. Arteries are thick-walled, veins are thin-walled. Okay, narrow lumen, broader lumen. समझ में आया पॉइंट? अब थिक वॉल है, बहुत ज्यादा मोटा है, इसके लिए ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेशर. थिन वॉल है, इसके लिए ब्लड फ्लोज एट लो प्रेशर. सिंपल है. मैंने एक बॉल रखा है यहाँ पे नीचे, अब बोला लास्ट बेंच तक पुश करना, तो आप क्या करोगे? सिर्फ पुश करोगे. पर मैंने बोला 4 बिल्डिंग आगे पुश करना है, तो पुश करोगे किक मारोगे? ऑब्वियसली किक मारोगे. यहाँ पे भी वही है. थिकर द वॉल, ग्रेटर द फोर्स जनरेटेड. सो हाई प्रेशर, लो प्रेशर. समझ में आया? अब बिकॉज दे आर थिक वॉल्ड, बिकॉज दे हैव हाई प्रेशर, दैट इज व्हाई द वॉल्स आर एब्सेंट. सोचो ब्लड ट्रिमेंडस प्रेशर से जा रहा है, उसके बीच में अपन ने वॉल्स, व्हाट आर वॉल्स? गेट्स. तो गेट को रखने वाला वैसे भी वो तोड़ के आगे जाएगा बिकॉज प्रेशर बहुत ज्यादा है. गेट क्यों चाहिए हमें या वाल्व क्यों चाहिए? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. तो वेन्स में जब ब्लड मूव कर रहा है, कहां पे मूव कर रहा है वेन्स में ब्लड? टुवर्ड्स द हार्ट. तुम खड़े रहोगे तो वेन पैर से ब्लड कहां मूव करेगा? अगेंस्ट ग्रेविटी और टुवर्ड्स ग्रेविटी. सो ब्लड प्रेशर लो है कि हाई है? सो व्हेन जब ब्लड ऊपर जा रहा है लो प्रेशर से अगेंस्ट ग्रेविटी, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? इट कैन गो डाउन अगेन. तो अगर वो नीचे गया वापस तो ब्लड ऊपर पहुंचेगा कभी नहीं, तो वैसे भी तुम पहुंचोगे ऊपर. ओके, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट व्हाट इज हैपनिंग, जैसे ही ब्लड ऊपर जाएगा बीच में वॉल्व बंद हो जाएगा, फिर ऊपर, फिर वॉल्व बंद, फिर ऊपर, फिर वॉल्व बंद. तो वो रेगुलेट करता है कि ब्लड ऊपर ही जाए नीचे ना. So that is why they are having valves present, valves absent. समझ में आया everybody? एक्सेप्शन यहाँ पे एक ही है जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के बेस पे और आयोटा के बेस पे देयर आर वॉल्व्स, पर वो स्टार्टिंग पॉइंट पे, अंदर नहीं, जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द आर्टरी. दैट विल स्टडी आफ्टरवर्ड्स. Then comes deep seated and superficial. What is deep seated? अरे इंग्लिश वर्ड है सर अंदर की साइड में ज्यादा प्लेस्ड हूँ. The arteries are more deep into your tissues, जबकि veins are superficial. So when you do like this, ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? मेजरली veins होते हैं, और जो अंदर की तरफ होते हैं वो क्या होता है? आर्टरीज. ऐसा क्यों? blood has to go to every muscle. तो अंदर होगा तो एवरी मसल, बाहर होगा तो क्या एवरी मसल नहीं जाता? तो वेन सब जगह पे नहीं जाता. फिर जब आर्टरी सब जगह जा रहा है तो आर्टरी से ही बनता है ना वेन, तो वहां से वेन भी तो आ रहा है ना. एग्जाम्पल देता हूं. तुम्हारे सामने ककड़ी रखी, ककड़ी, मम्मी ने बोला चॉप करने के लिए. पहली बार हेल्प कर रहे मम्मी को चॉपिंग करते करते, क्या होगा? उंगली कटेगी, फिर क्या बाहर निकलेगा? सोचो, यहाँ पे आर्टरी सुपरफिशियल होती, आर्टरीज आर सुपरफिशियल. व्हाट टाइप ऑफ ब्लड लॉस विल हैपन?
and at what pressure? तो blood फाउंटेन की तरह आएगा. नॉनवेज खाते हो ना, कभी चिकन को काट के देखा है? बड़े प्यार से काटते हैं, एक ही इसमें काटो पूरा बाहर निकलेगा. ओके, चलो सोचो अगर ऐसा उंगली कटी, मान ले कल आगे जाके तू शेव करेगा, कट हुआ, पहला तो फाउंटेन की तरह ब्लड निकला, उसके ऊपर मतलब वो ब्लड निकला छोड़ दे, बट दैट इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट. इधर आया, इधर से कहा जा रहा था? ब्रेन. सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नॉट गोइंग टू ब्रेन, वो पहुंच ही नहीं पा रहा है फॉर मोर देन 10 सेकेंड्स. हो गया तो कोमा, फिर फुल स्टॉप, काफी है. तो चलो, गॉड इज अगेन अ वंडरफुल क्रिएटर because majority of the arteries are deep seated, so that if there is a cut also, the cut is on the veins, so blood loss उसमें भी होगा, पर कौन सा होगा? तो थोड़ा ठीक है, डिऑक्सीजन ऊपर से एट अ लो प्रेशर थोड़ा कम जाएगा, मरोगे नहीं. हाँ, ज्यादा कट हुआ तो ऑब्वियसली मरोगे, पर उतना नहीं. हाँ, बट देयर इज आल्सो अ प्रॉब्लम, ऑल आर्टरीज आर डीप सीटेड ऐसा भी नहीं है. देयर आर ऑलवेज एन एक्सेप्शंस व्हिच आर देयर. Say एक carotid artery, one is behind the ears, third is on the thigh, fourth is in the groin area, I hope groin, testis, and one which is very commonly known to us, the radial artery. Picture में दिखाते ना, हीरो हीरोइन कट करते हैं, तो वो है radial artery. So these are some of the arteries which are superficial because of the bone anatomy. Bone के anatomy की वजह से ऊपर आ चुके हैं. But majorly arteries are deep seated. Am I clear? कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में? श्योर, अभी कॉपी करो आराम से.
हो गया लिख के? ठीक है ना? आर्टरी और वेन लिखा, तो कैपिलरी क्या है? कैपिलरी इसका एक ही लाइन का डेफिनेशन होता है, इंटरकनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स आर नोन एज कैपिलरीज. इट कैरीज बोथ टाइप ऑफ वेन, बिकॉज़ इसमें इंटरकनेक्शन होता है, so there is mixing of the vein, so it carries also oxygenated, it also carries the deoxygenated. अगर टेक्निकली बोला जाए तो अपन ने कहा आर्टरीज 3 लेयर से बना होता है, वेन्स 3 लेयर से बना होता है. ओके, उसमें से 2 लेयर निकाल दो ऊपर के, एक्सटर्नल और मीडियम. सबसे इनर लेयर जो बचता है वो है कैपिलरीज. कैपिलरी सिर्फ इंटरनल लेयर से बनता है, which is nothing but 9 standard टिश्यू चैप्टर, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, सब कुछ पढ़ा था. It is made up of cuboidal epithelium. Simple cuboidal epithelium is what capillaries are made for, internal layer. Then that completes arteries, veins and capillaries. 5 मिनट बाकी है, so we go ahead. आगे बढ़ो. अभी बढ़ नहीं रहे अपन, यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, पर तुम्हारा जनरल नॉलेज देखता हूँ मैं से. Where is your heart situated? Left side of the lungs. The lungs मेरे इधर है, लेफ्ट साइड ऑफ द लंग्स इधर हुआ, तो हार्ट इधर बाहर है. Between the ribs. Between the between lungs behind the ribcage. Okay. Slightly tilted towards the You are slightly tilted towards the lung. What is the weight of the heart? Size इतना? Is बाजू वाले का बाजू वाले का? तो once owns fist, cleans fist. Okay, सिर्फ fish लिखा तो बाजू वाले के तो आइसक्रीम का fish होता है. Okay, so quality was ना fist. So it is one's own clenched fist is what the size of the heart is. Weight of the heart 300 to 400 grams. Again, it would vary, but average 300 to 400. आधा किलो नहीं होगा. हाफ kg, 1 kg, 2 kg, 2 kg का पत्थर रखना थोड़ा अपने चेस्ट के ऊपर, समझ में आएगा क्या होता है. Okay, but almost 300 to 400 grams. That is what the weight of the heart would be. Size is one's own clenched fist. Position wise, it is present in the center of the thoracic cavity. Respiratory system में thoracic cavity, but it's present in the center of the thoracic cavity. The apex tilted towards the left side. अब एकदम proper लिखना है तो present in the center of the thoracic cavity, exactly behind the sternum bone. तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ऐसे मेरा कैविटी हुआ, यहाँ पे एक ड्रैगन लाइक बोन है, टच हुआ है. This bone is known as the sternum, also known as breastbone. तो इस बोन के exactly पीछे की तरफ अटैच होता है आपका, और हार्ट सेंटर में है, बट एपेक्स टिल्टेड ऐसे, तो ऐसे हार्ट है. पर अपन देखते हैं बच्चे जन गण मन सब नेशनल एंथम ऐसा, बिकॉज उनको यही पता है लेफ्ट साइड में. अपन बचपन में भी यही सीखा है, हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड. हार्ट इज नॉट ऑन द लेफ्ट साइड, हार्ट इज इन द सेंटर, tilted towards the left side, because maximum is formed on this side, तो अपने को लगता है कि लेफ्ट साइड पे. दुनिया में 9 लोग है, 8 लोग है जिनका हार्ट राइट साइड में भी है. ऐसा नहीं है कि हार्ट इधर ही हो, इधर भी है, इधर भी है और बाहर भी होता है. ओके, बाहर है तो ऑब्वियसली एब्नॉर्मल है, डेड है. एंड सुपरफिशियल हार्ट आल्सो, मतलब रिब केज के थोड़ा ऊपर अल्मोस्ट दिखाई देता है यहाँ पे इस तरह, तो ऐसे भी दिखाई देता है. So then again exception cases है. So these are the part. We will stop over here. इसके बाद अपन हार्ट का चालू करेंगे. आपको बहुत सारे छोटे छोटे डायग्राम्स और बहुत कुछ लिखना पड़ेगा इस बार. So अपने को वॉल्यूम बंद करके यहाँ पे लिखना ही बहुत कुछ है. So keep on writing so that
It is much easier for you to remember during the exam. अगर नींद पूरी गई होगी ना तो 15 मिनट का ब्रेक है, ढंग से पढ़ लेना और नेक्स्ट लेक्चर आई विल सी टू इट कि आई हैव अ स्मॉल टेस्ट फॉर यू एंड देन बी प्रिपेयर्ड टू ब्रिंग योर टिफिन्स। आई थिंक इनफ मैंने आपको वार्न कर दिया और तुम्हारा कुछ फर्क नहीं पड़ता पढ़ाई के ऊपर। तो अभी लगता है एक दिन दिखाने के बाद बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। मम्मी डैडी को भी पता चलेगा कि मेरा बेटा बेटी कितना हेलोजन दिया लगा है। यस मैडम। हाँ ऐसे बोल रहा हूँ। रिलैक्स, तब तक पढ़ो कुछ तो टाइम पास करने के लिए। मैथ्स का होमवर्क सर तो बोलता हूँ सब मैथ्स का होमवर्क है। मैं थोड़ा घेर डालता हूँ सर मेरे लेक्चर के अंदर मैथ्स का होमवर्क है। So collect the book now only.